गिरिवरधारी गोपीजना वल्लभ गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजना वल्लभ यशोधनन्दना व्रजजनरञ्जना यशोधनन्दना व्रजजनरञ्जना यशोधनन्दना व्रजजनरञ्जना यमुनातीरावनचारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम
Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Sai Gaur Premanandi. Om Agyantimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Book. So we are reading from Teachings of Lord Chaitanya, chapter 11, Service to the Lord, page number 10110, last paragraph. So who will start? Yeah, you can start. Somehow. Difference है? चालू किधर से करना? हाँ. Somehow or other, if one gets in touch with the pure devotee and thus develops a desire to render devotional service to Krishna, he gradually raises to the platform of love of Godhead and is thus freed from clutches of material energy. This is also explained in Srimad Bhagavatam 11.20.8, where the Lord himself says, "For one who is attracted by my activities out of his own accord, being neither lured or repelled by material activities, the path of devotional service leading to the perfection of love of God becomes possible. However, it is not possible to achieve the stage of perfection without the favor of pure devotee or Mahatma, a great soul. Without the mercy of great soul, one cannot even be liberated from the material clutches. And what to speak of rising to the platform of love of Godhead? This is also confirmed in Srimad Bhagavatam 5.12.12 in conversation between King Rahuguna of the Sin province in Siberia with King Bharata. When King Rahuguna expressed surprise upon seeing King Bharata's spiritual achievement, Bharat replied, Rahugunatita tapasa na yati na jaya na chindasa naiva jaladnishari vina mahat rajona bhishikam. My dear Rahuguna, no one can attain the perfected stage of devotional service without being favored by a great soul or a pure devotee. One can attain the perfection stage simply by following the regulative principle of scriptures, or by accepting the renounced order of life, or by prosecuting the prescribed duties of householder life, or by becoming a great student of spiritual science, or by accepting server austerity and penances for realization. Similarly, when the atheist father Hiranyakashipu asked his son Prahlad Maharaj how
he become attracted to devotional service, the boy replied, "As long as one is not favored by the dust of the feet of pure devotees, one cannot even touch the path of devotional service, which is the solution to all the problems of material life." Okay, Bhagavad. okay. So here, association of pure devotee is glorified or stressed here. So English, Hindi, Hindi, English. Oh. हाँ? Mix चलेगा ठीक. So here, association of pure devotee is emphasized here. So it is said in the scripture, without association of pure devotee, you cannot attain perfection in devotional service. And to make it more better understand, it is said, you cannot even make advancement also. Perfection is later. You cannot make advancement without association of pure devotee also. So therefore, in first canto, Narad Muni section, Srila Prabhupada writes a very nice purport is there, where he says that everything begins from the association of pure devotee. Now somebody may ask, but do we have association of pure devotee or not? So the pure devotee should not be only taken from the Vapu. His Vani is getting circulated in the Parampara, that is also association of pure devotee. Sure enough, if a pure devotee speaks some lectures, so he has a very high, like a 440 volt ka current रहता है उनका. So even if it touches somebody, he blesses somebody, it has immediate effect. Whereas if somebody carries his Vani and with the purity he just says also something, but it will take some time. So there is a difference between, though it is said that Vani and Vapu are non-different, or sometimes Vani is very powerful, but still it is seen that when some pure devotee is present personally, like Madhvendra Puri was there, and he just blessed Ishwar Puri, my dear child, let you have love of Godhead, let you relish Krishna, let you relish Krishna, let you have the love of Godhead. And then Ishwar Puri became immediately mad with the love of Godhead. So just he served the spiritual master and immediately got the benefit, immediately. And there are many devotees, they are also serving for a long time, but then they are taking time for purification. Time jata hai usme, hai ki nahi? So it is said in the scripture, when Lord appears, so he makes the plan that, okay, when I am appearing, I will give free love of Godhead, or any kind of package he has designed when he comes. I will give liberation free, or love of Godhead free, or I will give mukti, going to Swarga. Like Kanayakeshpu this time he was telling in the lecture, na? Krishna, when he kills any demons, the minimum level where the demon goes is Sayujya, means going to the Brahma Mukti. Then Sarupya, then ahead Salokya, Sashti and Prema. Prema means Putna is Prema. Putna got Prema. And Agasur, he got Sarupya. Shishupal, he got Sayujya. Kansa, Sarupya. Kansa got Sarupya. So you just understand. So Krishna's minimum is that. But when Lord Vishnu kills somebody, so he gives him, okay, you get born into Swarga. You go to Swarga and then enjoy life. So he does not send them to that. That can be the last, like Sayujya will be last. Uske upar nahi, zyada nahi. So if he kills somebody, then he may get promoted to the heavenly planet. And then he can enjoy. It is also said in the Bhaktyalok by Bhakti Vinod Thakur, if we practice devotional service sakam bhakti with some desire to get material benefit, or we want to control our mind, or we want to control our senses, so we are practicing bhakti. So that is sakam bhakti, that is not pure bhakti. Pure bhakti means only for the pleasure of Krishna. That is pure bhakti. No other
motive, no other motive. Krishna nu anusilanam, only for Krishna. No control of senses, no control of mind. It will be controlled automatically. Don't worry about it. Actually, this is secret of bhakti. If somebody just follows the instruction of a spiritual master and scriptures with a full surrender, that whatever he's saying I will follow. Even though I have conditioning, I may go sometime here and there. But if he follows, then he should not even endeavor to control his senses also. Because spiritual master says how he has to eat. If he just follows that, only controlling senses. So he need not even extra endeavor to control his mind and senses. No. It is said, because you cannot control only. It is said by Bhaktivinoda Thakur, by our endeavor you cannot control. So the path of jnana and yoga are useless. Because they cannot control. In path of jnana and yoga is self-endeavor is required. Na? By your endeavor you want to control. But by our endeavor you cannot remove ignorance. And you cannot remove the lust. Lust and ignorance cannot be removed by our own effort. It can only be done by the Lord. So when Lord becomes pleased by our devotional service, then He removes these things. And then we become qualified to serve Him fully, with love actually. Without that, it's not possible. So we are, what is expected from us to surrender to the Lord? As much as we can, kaya, manasa, vacha. So with our kaya, our body, mind and vacha, we have to just surrender to the Lord and practice devotional service in a surrendered mood, sharanagati. And everything else will be taken care. This is a simple understanding of devotional service. But still then you may ask, Prabhuji, but then why it is said we have to fast? But that is said by spiritual master that you should do that. So like Ekadasi day we can fast at least till full fasting we can do till afternoon. And then do not eat any anna. No food, means no grains. You can eat without grains. So then it is okay. So that is for udara vegam. Udara vegam, jihva vegam, udara upastha vegam. So udar vegam means udar का वेग क्या है? ज्यादा खाना. ओवर ईटिंग इज उदर वेगा. सो इसलिए एकादशी फास्टिंग क्यों करना है? नहीं खाना है, वो उदर वेग को कंट्रोल करने के लिए. एंड जीवा वेगा मतलब पैलेटेबल चीज खाना, चिप्स खाना, मिठाई खाना, वो पैलेटेबल हो गया, तो वो जीवा वेगा में, तो उसको भी कंट्रोल करना. तो जिह्वा वेगम उदरो. सो ओके, इफ आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल, so then what I should do? I should eat prasadam in the mood of devotion. That is the progress. Don't think that you should give up eating. No, don't give up eating. You will not be able to give up. अगर मान लो आज छोड़ दिया, कल को गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का व्यास पूजा हो जाएगा. तो किसी दूसरे गोस्वामी का व्यास पूजा होगा तो आपको खाना ही पड़ेगा. अब बैठ जाओगे, सब लोग खा रहे, बोले क्या करना है ना. देखो ज्ञानी क्या करते हैं, ज्ञानी एक इधर मुंह करेगा, इधर मुंह करेगा, तपस्या करना. भक्त लोग क्या, दोनों मिलके साथ में. अब दोनों मिलके साथ में आएंगे तो क्या करेंगे? ददाती प्रतिगृह्णाति, भुंगते भोजायते चाहिए, वो भी खाएंगे वो भी खाएंगे. ये भक्तों का समाज है. हाँ, अगर बोलेगा नहीं प्रभु मैं अपना 2 आइटम खाऊंगा, मैं इधर मुंह करके खाऊंगा, ऐसा नहीं होता है. So you understand, devotional service is like that. It's not a speculation. It's given in the scriptures clearly by Bhaktivinoda Thakur and Srila Prabhupada. So therefore Srila Prabhupada says that we have to take only prasadam on regulated times, and slowly these urges will be controlled because of our doing service to the Lord. When we serve the Lord, see, this comes in 11th canto. Yes, this sloka only, 11.20.8. You see here up. Yadichaya mat kathado jat shraddhastu yah puman na nirvinno nati sakto bhakti yogosya siddhida. यही वो श्लोक है 11.20.8. यही मैं अभी आपको बता रहा हूं. ना निर्विन्नो नाति सक्तो, मतलब ज्यादा डिटैच भी नहीं होना है और ज्यादा आसक्त भी नहीं होना है. यही व्यक्ति भक्ति कर सकता है. सो निर्विन्न, हु बिकम्स निर्विन्न मीन्स इंडिफरेंस.
So let me know who becomes indifferent. Yes, anyone? Indifference किसको आता है? उदासीनता किसको आती है? हाँ, लेकिन ओके ठीक है, क्यों डिटैच हुआ? क्यों डिटैच हुआ वो? बैड एक्सपीरियंस। हाँ, फ्रस्ट्रेट हो गया ना। मान लो स्वीट राइस ज्यादा खा लिया, अभी 2-3 बार चला गया क्लियरिंग को, तो यार अब कभी नहीं खाऊंगा। क्या इतना बर्बाद कर दिया इसने मेरे को, टाइम बर्बाद किया मेरा, पेट खराब हो गया। कभी ऐसा आता है ना, कुछ गड़बड़ खा लिया, कुछ गड़बड़ थोड़ा इधर उधर कर दिया, तो हम एकदम शपथ ले लेते हैं, नहीं करूंगा अब मैं। तो निर्विण्ण, ना निर्विण्णो। So generally the jnanis, they are frustrated people, because none of the living entity can give up enjoyment. Either he has to enjoy spiritual pleasure or material pleasure. You cannot give up. And in between stage where you don't enjoy anything is a frustration stage. That is like a silent stage. Even Bhaktivinoda Thakur also says कि if you are not speaking Krishna katha, better you be मौन, चुप रहो, प्रजल्पा मत बोलो। लेकिन मौन वाला स्टेज कितने दिन तक रहेगा? वो ज्यादा दिन तक रहता नहीं है, ठीक है। दैट इज लाइक यू नो, मौन किस लिए किया गया है? ताकि आप गलत चीज मत करो। मौन इज फॉर डोंट डू रॉन्ग थिंग, बट कृष्णा कॉन्शियस टीचेस अस टू स्पीक अबाउट कृष्णा, लर्न अबाउट कृष्णा, स्पीक विद द डिवोटीज, मत चित्ता, मत कथा दो। So you speak about Krishna in association of devotees. So that is a devotee. But again, not speak prajalpa or kukatha or Vaishnava ninda, sadhu ninda. These things we should not speak or we hear. Gramme katha, we should not hear or speak. So that's why we should remain silent. So that is spoken in the scriptures. So na nirvinno means we should not be too much detached and na ati asakto. ज़्यादा आसक्त भी नहीं होना है। आसक्त मतलब you are getting attached to the material results too much. Okay, by working hard in this way, I will get this thing. Let me work hard. What about the devotional service? Oh, I don't have time for devotional service. So too much attached to the material results. If he becomes failure in his life, he becomes too much depressed. Success हो गया तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। तो ये क्या है? आसक्ति है। तो अटैचमेंट मटेरियल लाइफ से, कर्मकांड से, फ्रूटिव रिजल्ट से कम होना चाहिए, और संसार से भी जो डिटैचमेंट है उतना नहीं कि वो हिमालय भाग जाए। थोड़ा बहुत डिटैचमेंट चाहिए, इसलिए बोला कि चाहिए थोड़ा आसक्ति संसार से भी थोड़ा सा चाहिए, उसको बताते हैं भक्तिविनोद ठाकुर। और थोड़ा आसक्ति मीन्स व्हाट? टू मेंटेन आवर बॉडी एंड सोल टुगेदर। लाइक ज्ञानी दे वॉन्ट ईट, ज्ञानी खाएगा ही नहीं बहुत दिन तक, लेकिन एक भक्त खाएगा, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 3 टाइम। So he will eat, and Jnani will not eat. Jnani will show very hard, severe austerity, going into some river in the cold winter season and then dipping inside and then doing bhajan. River के अंदर भजन कर रहा है ठंडी में, तो he can do, but Bhakta cannot do. Bhakta will tell, गीजर किधर है? गरम पानी। गरम पानी में बैठ के जब कर सकता हूँ, लेकिन ठंडे पानी में नहीं। So that is there. So therefore it is said कि we can enjoy that much pleasure what is needed to maintain our body and soul together. So that much. And even if you see sometime here excess here and there it is happening, it's not again false. इसमें कोई fault नहीं है, because we are not still yet purified. तो हम रास्ते में हैं, आप रास्ते को मत छोड़ो, you will get purified after some time. क्योंकि भक्ति हमारे अंदर जागी नहीं है। एक बार भक्ति जाग गया, एक बार सूरज आ गया तो अंधेरा चला जाएगा। You cannot remove ignorance. सूरज को आने का वेट करना है आपको, तो आप भक्ति करो, don't leave the bhakti path. Therefore it is said, sometimes devotee get frustrated. Bhaktivinoda Thakur writes, मेरे से इतना कंट्रोल किया, सेंसेस कंट्रोल नहीं हो रहा, क्या है? भक्ति वर्क ही नहीं कर रहा है। He said, don't leave bhakti. You should not get frustrated by your endeavor to control senses. No, don't get frustrated. Surrender to the Lord. Again, go and pray to the Lord, and tell to the Lord, I am so fallen. Please engage me in your service, my Lord. So as soon as we are engaged again in the service of the Lord, we forget sense gratification.
Yes, correct. Whenever we are engaged in service of the Lord, we forget sense gratification. You don't worry about it. Like if you have whole day of Janmashtami Seva, even if you are eating or sleeping, do you mind it? You don't mind it because you are doing Seva. Yes, correct. In the similar way, in the spiritual world also, when somebody is having love for Krishna, doing all the day service for Krishna, he or she will not mind whether he is eating or sleeping because he is doing Seva for Krishna with love. So problem is not that. Problem is we have to give up our enjoying mentality and serve Krishna. That is the whole understanding. And slowly, slowly it will come. So do not worry about it, it will come. So therefore he says, Lord Krishna is saying to Uddhava, if somehow or other by good fortune one develops faith in hearing and chanting my glories, such a person being neither disgusted with nor very much attached to material life should achieve perfection through the path of loving devotion to me. Who can do that? These two qualifications as we discussed, not neither disgusted nor very much attached to material life. Okay. And if somehow or other by good fortune one develops the faith in hearing and chanting my glories. So he should keep on hearing, chanting, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, all 9 processes he should keep doing. And not be too much attached, not too much detached. Just live in the world and do your bhakti. That kind of person can attain perfection through the path of loving devotion. Because devotion requires use of senses. The senses has to be utilized. If you don't use your senses, Jnani is there, what they do? They don't use the senses. They just stop it by force. By force stopping. कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं देखना है. और उसको force stopping तो करते, उसको negative में लेके जाते हैं. They torture the senses. Not only they stop, they torture the senses by giving hot sun. Like last time I said, like hot in the summer season, they sit in the hot sun and they keep some coal, burning coal in some vessel and they keep on their head. And here also all where they put fire and then they perform sadhana. सोचो कर पाओगे? इतना मुश्किल है, इतनी गर्मी में भी गर्मी और लेके, तो ये टॉर्चर हो गया. They torture themselves. Similar yogis also. So, but they think that by too much restraining the senses, will forget sense enjoyment. They think like that. But what happens? How long will restrain? एक बार वो फिर निकल के आ जाता है. टंग. कोई भी enjoyment आ गया तो then sometimes things are चलो चलता है. Immediately gone. So therefore, na nirvinno na ati asakto. So this is the what path spiritual master or pure devotee gives to practitioner of devotional service. They give this path actually. Therefore you find Srila Prabhupada gave us morning program, evening program, then prasadam, then book distribution, then service to the Lord, deity service. You find all this is in the world also. At the same time, we are not too much detached, we are not also too much attached. You see, correct? You can see, like you are going to for job, you are staying here. So you are staying here practicing devotional service is like a detachment wala. Then when you go to the job, you are little attached. You are attached to the work, completing in time, है ना? So people may say, you are also working like me, you are also attached. But no, our another part of life is detached. We are working only for Krishna. Even job also. So in job you cannot directly connect job to Krishna, but the result of job is given to Krishna. So that is also devotional service. The result of the job should be for Krishna. Okay. So however, it is not possible to achieve the stage of perfection without the favor of pure devotee or Mahatma. So therefore this shloka is quoted. Rahugunaya tat tapasa na yati na chejjaya nirvapanat grihadva na chandasa naiva jala agni surya vina mahatpada rajo bhisekam. Who is saying? This is said by Jad Bharat. Jad Bharat is saying Rahugunayata tapasanayati na chejjaya nirvapanad. So you cannot attain perfection, just see clearly written here, by tapasya, by doing tapasya you cannot attain perfection. Na chejjaya, ijjaya means worship, by worshipping gods also you cannot attain. Nirvapanadva, by accepting renounced order of life, nirvapanad. Grihadva,
by following duty of the householder life, grihad, घर के कार्यों को ठीक से करना, householder. ना छंदसा, by reading scripture also you cannot attain. जला अग्नि, जल में डुबा लो या अग्नि जला लो. बोल दिया already. जला अग्नि सूर्य. You cannot attain perfection. How you can attain perfection? Mahatpad Raja Abhishekam. Because Krishna is saying in the 11th canto, same thing. Without Bhakti Yoga, you cannot perfect your life, and that Bhakti Yoga is given by my pure devotee. Here, Yad Ichchaya Mat Kathado. Therefore, is mentioned, if somehow or other by good fortune one develops faith in hearing, who gives this faith? Pure devotee. If pure devotee faith देते हैं, तभी हम ना निर्विण्ण ना आसक्तों में चले आते हैं. नहीं तो just imagine Prabhupada had not been there. So we had certain desire to practice some transcendental path or any path of liberation. So what you could have done? Either you have become some बाबा बन जाते हम, कुछ दाढ़ी बढ़ा लेते, है ना, और फिर कुछ भी हो सकता था, है ना. आज भी बाबा कई लोग हैं यूट्यूब पे. So we could have totally misdirected ourselves and others. Totally. कुछ पता ही नहीं लगता कि आप जैसे सदगुरु, ये यूट्यूब पे नहीं है ना, सदगुरु हो गया मान लो. तो सदगुरु मीन्स यू नो ही स्पीक्स ऑल रबिश थिंग, है ना. फ्रॉम हिज माउथ गुड इंग्लिश कम्स but no substance comes. He just speculates a lot, because he has no guru. He says in one place, I don't have any guru. I just learnt everything by my practice, by my experience. Prabhupada clearly says, if you don't have guru, then who can hear your knowledge? You are rascal. If you don't have guru, you are rascal. Because Veda says that तद विज्ञानार्थम सगुरुम एवा अभिगच्छेत. जाना ही है गुरु को, और वो गुरु के पास जाना मतलब बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ और बिगिनिंग ऑफ ट्रांसेंडेंटल पाथ. ही हैज नॉट बिगन ओनली एंड ही हैज सेट ऑन द आसन एंड टेलिंग टू होल वर्ल्ड आई एम सदगुरु. अरे जो डिसाइपल ही नहीं बना, वो गुरु कहां से बनेगा? पर डिसाइपल तो बनो. फर्स्ट लर्न व्हाट इज द राइट एक्टिविटी टू बी डन. फर्स्ट सरेंडर टू सम गुरु, देन ओनली यू कैन गेट द कृपा ऑफ गुरु, कृपा ऑफ भगवान. You can learn scriptures. Without learning anything, just speaking some nonsense and then getting claps and applause from so many people. This is some simply, इसीलिए बोलते हैं ना, cheaters are being, there are so many people who want to cheat others and they also want to be cheated. So like that. So this is a whole civilization of cheaters and cheated वाला. तो यहाँ पे clearly लिखा है. So therefore, always remember in our life, we cannot get perfection without Mahatpad Raja. This is mentioned, and that Mahatpad is given by Srila Prabhupada in his parampara. So that is why we should always look for. सब कभी लगता है नहीं अभी हम प्रभु जी हम तपस्या करेंगे, हैं अभी हम, आप जो करना है इसमें जो लिखा है वो करो, करना है तो, लेकिन Mahatpad का रज लेके करो. Mahatpad का रज लेके करना है, उसको छोड़ दिया तो ये सब बेकार है. तो इसलिए ये सब बेकार इसलिए नहीं है कि दे आर नॉन फंक्शनल, बट दे विल ओनली फंक्शन और दे विल ओनली अट्रैक्ट द मर्सी ऑफ लॉर्ड व्हेन देयर इज महत्पाद रज. देन दे विल गेट परफेक्शन. एंड देयर आर सो मेनी श्लोका इन द भागवतम आल्सो, मेनी श्लोकास आर देयर लाइक दैट, कि बिना महत्पाद इज नॉट पॉसिबल. ओके, डन. So as long as one is not favored by the dust of feet of the pure devotee, he cannot even touch the path. He cannot even touch the path of devotional service. Just see, he cannot even touch the path. मतलब इसीलिए यहाँ पे लिखा है if somehow or other by good fortune. इसका मतलब यद इच्छया जो लिखा है, मतलब हमको भी कभी लगता है कि मैं भक्त कैसे बना, और मैं तो अपने माला से बनाऊं, अपना माला जप करके मॉर्निंग प्रोग्राम में आके भक्त बनाऊं. लेकिन यहाँ पे लिखा है unless one is, as long as one is not favored by the dust of pure devotee, it means in our parampara the dust is thrown. फेंक दिया है dust. आप किसी को जाओ थोड़ा ये बोल दो, this is dust only. If somebody reads Prabhupada's book, the dust of pure devotee goes to him. Dust means what? Dust of pure devotees means the parampara, the whole parampara is coming. The whole parampara, it's like a vehicle of knowledge. The knowledge is being, transcendental knowledge is being brought in the parampara.
And dust means one takes shelter of such pure devotee and accepts him as a spiritual master or his guru and surrenders to him. So as soon as he surrenders, protection is granted. माँ सुचह, कृष्णा कम्स, ओके, इसने सरेंडर कर दिया. गुरु क्या बोलते हैं कृष्ण को, देखो कृष्ण इसने सरेंडर कर दिया, और कृष्ण को तो पता है ये तो निकम्मा है, बट कृष्ण को बोलेंगे नहीं नहीं, इसने सरेंडर मेरे को किया है, ठीक है, अभी आप इसको एक्सेप्ट करो. तो गुरु इज मोर मर्सीफुल देन कृष्ण. Therefore, Nityananda is more merciful than Chaitanya Mahaprabhu, the Guru Tattva. So therefore, the dust is this only. When someone surrenders, like Jagai surrendered, and Nityananda says, hey, he tried to protect me. And then immediately Chaitanya Mahaprabhu changed his mood. He tried to protect Nityananda. Okay, come. I will give you love of God. Immediately. So if someone surrenders to Guru, then immediately the dust is gone to him. And when you get the dust, then Lord cannot do anything. Lord, okay, ठीक है. अभी तुमको surrender हो गया तो भैया मैं कुछ नहीं करूँगा, उसको मैं कृपा देना ही पड़ेगा. Like that it happens. So therefore it's mentioned. So therefore we should not offend any great soul. Any great soul means even Vaishnavas also. So Mahatpad, because their Raja is only on our head, that's why we are able to practice any kind of austerity, any kind of mercy which you are getting, that mercy is coming because of Mahatpad Raja. इसी के कारण से हमें मर्सी मिल रहा है, नहीं तो नहीं मिलेगा. लेक्चर सुनने का मन हो रहा है, हियरिंग का सेवा करने का मन हो रहा है, ये मन कैसे हो रहा है, यहीं से चालू हो रहा है, महत्पाद रज अभिषेक. तो ये ध्यान देना है हमेशा. दिस इज द इसेंस. ओके, गो अहेड. यस, यू कैन रीड. Thus Lord Chaitanya told Sanatana Goswami that all scriptures stress association with pure devotees of the Godhead. The opportunity to associate with the pure devotee of the Supreme Lord is the beginning of one's complete perfection. This is also confirmed in Srimad Bhagavatam 1.18.13, where it is said that the facilities and benedictions which one achieves by association with the pure devotee are incomparable. They cannot be compared to anything, neither elevation to the heavenly kingdom nor liberation from material energy. Lord Krishna also confirms this in the most confidential instruction in Bhagavad Gita, wherein he tells Arjuna, Manmana bhava madbhakto madhyaji mam namaskaru mamai vaishyasi satyam te pratijana priyosi me. Always think of me and become my devotee. Worship me and offer your homage unto me. Thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. Such a instruction from Krishna is more important than any Vedic instruction or even regulative service. There are certainly many Vedic injunctions, ritualistic and sacrificial performances, regulative duties, meditative techniques, and speculative process to attain knowledge. But Krishna's direct order, always think of me and become my devotee, should be taken as the final order of the Lord and should be followed. If one is simply convinced of this order and comes to his devotional service, giving up all other engagements, one will undoubtedly attain success. To confirm this statement, Srimad Bhagavatam 11:29 says that one should follow other path to self-realization only as long as one is not convinced of the direct order of the Lord Sri Krishna. It is the conclusion of Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita that the direct order of the Lord is to give up everything and engage in devotional service. Go ahead. Firm conviction to execute the order of Lord is known as faith. If one has faith, he is firmly convinced that simply by rendering devotional service to Lord Krishna, all other activities are automatically performed, including ritualistic duties, sacrifices, yoga, and the speculative pursuits of knowledge. If one is convinced that devotional service to the Lord includes everything, no other activity is required, as stated in Srimad Bhagavatam 4:31-14. यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृपयन्ति तत्सकन्दभुजोपशाखा प्राणोपहराचयतेन्द्रियाणां तथैव सर्वाणं अच्युतेजा. By watering the root of tree, one automatically nourishes the branches, twigs, and fruits.
and by supplying food to the stomach, all the senses are satisfied. Similarly, by rendering devotional service to Krishna, one automatically satisfies the requirements for all other forms of worship. One who is faithful and firmly convinced of this is eligible to be elevated as a pure devotee. Okay. So again, in this verse, all what we read now. So this is a verse from 1.18.13. Tulyam lavenapi na swargam na punarbhavam bhagvat sangi sangasya martanam kimutasishah. So तुल्याम लवे नापी, यू कैनॉट तुलना नहीं कर सकते किसका, लवे नापी, इवन स्मॉल मोमेंट ऑफ एसोसिएशन विद द प्योर डिवोटी यू कैनॉट कंपेयर. व्हाट कंपेरिजन यू कैनॉट डू, ना स्वर्गम, स्वर्ग जाने का कंपेयर भूल जाओ, ना पुनर्भवम मीन्स मुक्ति भी मिल जाए उससे भी कंपेयर नहीं कर सकते प्योर डिवोटी का संग. आप समझो, भगवत संगी संग से मतलब वही वाला, मर्त्या नाम की मुतासिस. तो बाकी ये जो मरने वाले लोग हैं इस संसार में, मृत्यु लोक में, उनको जो भी इच्छा है, उनकी इच्छाएं है, उससे क्या तुलना करना. स्वर्ग से नहीं कर सकते, पुनर्भवम से नहीं कर सकते. तो किसी को मान लो मेरे को जॉब चाहिए माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में जॉब चाहिए, या मुझे बिलगेट बनना है, सबसे रिच आदमी बनना है, या बहुत अच्छा आइटम खाना है, या बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंग बनाने हैं, उससे क्या कंपेयर करोगे जब स्वर्ग से नहीं कंपेरिजन हो रहा है. साधु संघ का, प्योर डिवोटी का एसोसिएशन, इसका मतलब हमें अपनों कितना फॉर्चुनेट समझना चाहिए, है ना. जैसे हम कभी, इसलिए प्रभुपाद बोलते थे रास्कल्स. प्रभुपाद क्यों बोलते थे रास्कल्स, बिकॉज वो बोलते थे कि अरे तेरा क्या पोजीशन है और तू इतना बड़ा आदमी बना बैठा है और ऐसे बोल रहा है जैसे बहुत लर्नेड है ना. रास्कल्स प्रभुपाद यूज्ड टू से फॉर दोज पीपल हु आर वेरी ग्रेट एट ग्रेट पोस्ट बट देयर नॉलेज इज पुअर फंड नॉलेज, टोटली कुछ नॉलेज नहीं है और बकर 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 बोलेंगे. टू मच दे विल स्पीक अबाउट दैट दे नो सो मच. Prabhupada used to say rascal. So because he does not have association of pure devotee. So like when we meet some rich people or anybody, so sometimes we feel that, oh, he is such a rich person. No, you should not feel like that. Okay, you may respect him because he is little more than ordinary people. But you should value this thing. So we should think in this way, I have got mercy of parampara. Now let me give him this mercy of parampara through the knowledge or whatever books, Srila Prabhupada books or prasadam. So we should be confident of our position first. हमें कॉन्फिडेंट रहना है, नहीं तो हमें क्या लगता है हमें डोनेशन दे देगा थोड़ा. ठीक है, you can be little humble, but you should never think that oh, he is bigger than us. No. We may be small, no issue. हमने जॉब भी नहीं किया, कोई बात नहीं, पैसा भी नहीं कमाया है, हम कंगाली हैं, लेकिन फिर भी हम अमीर हैं. क्यों? क्योंकि हमारे पास महत पाजरज है. ये ध्यान देना है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मर्त्या नाम की मुतासिस है. मर्त्य लोक में जिनको क्या क्या आशीष है पाने का इच्छा है, उनसे क्या कंपेयर करना प्योर डिवोटी का एसोसिएशन. इस्कॉन जो है उसका क्या कंपेरिजन है. वो लोग अभी बड़े रिच हैं, अगले जन्म में कुत्ता बन जाएंगे. क्या है, वही होने वाला है. बिकॉज दे डोंट फॉलो एनी रेगुलेटरी प्रिंसिपल ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड इट्स वेरी क्लियर, ह्यूमन लाइफ इज ओनली गिवन टू दोज हु यूटिलाइज इट फॉर growing themselves in spiritual life. Otherwise next life they will not be human. Finish, खत्म. अगर रजोगुण भी फॉलो करना है तो राजा रजोगुण में होता है, तो एटलीस्ट शास्त्रों के नियम को पालन करना पड़ेगा ना. राजा को भी तो तभी तो दोबारा बनेगा ना मनुष्य. अब आजकल के लोगों को शास्त्र पता ही नहीं है, तो 100% दे आर गोइंग टू बी एनिमल ओनली. इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि 99.9% ऑफ पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड आर नराधमा. नर अधमा, नर के नीचे हैं, नरों में नीचे हैं, तो नर अधमा है. भले वो रिच हो, एमए किए, पीएचडी किए, लेकिन नर अधमा. दे मस्ट फॉलो सम बेसिक प्रोसेस टू एलिवेट देमसेल्फ, अदरवाइज नॉट, दे कैन नॉट. इसलिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि तुल्याम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम. बट अभी क्या हो गया है,
प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, कलयुग में उल्टा है। कलयुग में जो बहुत पफडफ लोग होते हैं उनके पास डिवोटी जाके क्या बोलते हैं कि आप बहुत बड़े हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। नाउ व्हाट यू डू, यू गिव अप योर ईगो, गिव अप योर प्राइड एंड कम एंड सरेंडर टू चैतन्य महाप्रभु। या दिस इज हाउ द प्रीचिंग इज गोइंग टू हैपन इन दिस वर्ल्ड। हमको थोड़ा उसे प्रेज करना पड़ेगा, भले हमें अंदर अंदर पता है कि ये निकम्मा एक नंबर का भगवान के पास कभी आया नहीं है, फिर भी हमें जाके उसे थोड़ा प्रेज करना पड़ेगा और फिर उसको बोलो थोड़ा आप आइए, मंदिर आइए, मंदिर। जैसे एक मेरे को डोनर मिला तो बोलता है कि मैं राधा कृष्ण को अपना भैया भाभी देखता हूँ, देयर भैया एंड भाभी। ओके, वेरी नाइस। देन ही सेड ही गॉट ट्विंस नाउ, अभी उसके 2 बच्चे हो गए, ट्विंस आए। तो बोला है प्रभु जी यू विल नॉट बिलीव व्हाट, जो मेरे कृष्ण है ना घर में, वो एकदम मेरे बच्चे के रूप में आ गए प्रभु जी, देयर फेसेस आर एग्जैक्टली मैचिंग प्रभु जी। मैं बोला वाह कृष्ण का इतना हाई रेसिप्रोकेशन आपके साथ। बट देन आई कॉल हिम टू टेम्पल, ही हैज नो टाइम। तो दिस इज कॉल्ड भावुक भक्ति। भावुक है वो। तो इन लोगों को थोड़ा सा पैम्पर करना पड़ता है, धीरे धीरे मंदिर आएंगे। बट एटलीस्ट ही इज नॉट अगेंस्ट कृष्णा, he has some misconception about Krishna, but it can be removed, but not against Krishna. But again, for these people you have to पैम्पर थोड़ा करना पड़ता है। हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हाँ कृष्ण भाभी हो, भैया भाभी हो, क्या आप कितने एलिवेटेड हो बोलना ही पड़ता है, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे। जिनका मटेरियल पोजीशन हाई रहता है उनका ईगो भी हाई रहता है, उनको आप डायरेक्टली कन्विंस नहीं कर सकते हो, उनको थोड़ा मक्खन मिश्री खिलाना पड़ता है। मक्खन मिश्री खिलाने के बाद फिर उनका ईगो धीरे धीरे तोड़ना पड़ता है। दिस इज द वे एक्चुअली। So therefore it's mentioned here, na, tulayam lavenapi. And Krishna also says, man mana bhava mad bhakto. So this is the most confidential instruction. See, Prabhupada is writing here, his Acharya, he's saying, is the most confidential and such instruction is more important than any Vedic instruction or even regulative service. मन मना भव मत भक्तो, भगवान ने कितने मजे में बोल दिया है, मन मना भव मत भक्तो मद याजी माम नमस्कुर। ऐसा ये इंस्ट्रक्शन आपने कभी गीता में पढ़ा, उतना सीरियसली लिया गया? एंड हम तो आ ही रहे मंदिर में, नमस्कार तो कर ही देते हैं, भक्त तो बन ही गए हैं थोड़ा। प्रभुपाद लिखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है, देखो ये है रियल परंपरा। जब भी वैदिक नॉलेज परंपरा में आता है उसको बोलते हैं आमनाया। आमनाया मीन्स the Vedic knowledge come into parampara. So then it is taught in a proper way, in a certain way. That is amnaya. तो संबंध ज्ञान जो होता है, what is संबंध ज्ञान? First thing is amnaya. You have to come in parampara. The Vedic knowledge should come in parampara. Amnaya. Then Krishna is param tattva. He is a param tattva. Then comes Krishna is sarva shaktiman. He is omnipotent. This is dasamula tattva by Bhaktivinoda Thakur. What is sambandh gyan? So amnaya, param tattva, and then sarva shaktiman, akhil rasamrit murti. He is a reservoir of all rasas. कृष्ण के पास सब रस है, दास्य रस, साख्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य, सब रस है कृष्ण के पास, कुछ भी लेना आप जाओ। He is अखिल रसामृत मूर्ति। तो परम तत्व, nobody is superior than Krishna, and he is omnipotent. He is a fully potent, nobody can defeat him, and he is everywhere present. He can serve his devotee as much as like, he will never fall down. He is fully with energy, full, beautiful and knowledgeable, renounced, all these things. Then Bibhinamsa, we are all Bibhinamsa. We are energy of Krishna. And then Nitya Mukta and Nitya Baddha. So Nitya Mukta means those who live in spiritual world. Nitya Baddha means we are Nitya Baddha. And then, so these all things come, and then about material world. So these are called Sambandha Gyan. And then Abhideya is Bhakti, and Prayojan is Prema. So he writes in Dasamula Tattva, these are 10 Tattva. So 8 Tattva tells about, 8 means पहला वाला आमनाय है, आमनाय को मिला के 8 तत्व संबंध ज्ञान है, और 9वां क्या है भक्ति, और 10वां है प्रेम। ये सिंपल दसमूल तत्व भक्तिविनोद ठाकुर के। तो संबंध ज्ञान ये है, जिसे संबंध ज्ञान। तो वन शुड नो दैट ही इज अ परम तत्व, ही इज अ सर्वशक्तिमान, ही इज अ
Akhila Samrit Murti. Many times Radheshampu also teaches in same his courses these things. Yeah. So Nitya Baddha, Nitya Mukta. So this we should be knowing. So therefore it is mentioned in all the Vedic literature. This is the main thing which Chaitanya Mahaprabhu says. Sambandha Gyan, Abhideya and Prayojan. You might have heard in Chaitanya Charitamrita, he clearly says, Kaviraj Goswami, that Chaitanya Mahaprabhu while teaching to Sanatana Goswami what he says, before that it might have come, कि in Vedas only three things are taught. Sambandha, Abhideya, Prayojan. But you will say, प्रभु जी बहुत कुछ बोला वेद में. नहीं, वो संबंध अभिधेय प्रयोजन आमना है. एक मतलब एक सिस्टम, एक परंपरा में बता रहे हैं वो, कि परंपरा में ये चीज बताई गई. बिकॉज वैदिक नॉलेज आपकी दुकान से खरीद के कोई मिलता नहीं है. यू हैव टू गो टू गुरु हु इज इन परंपरा, देन ओनली इट इज बेनिफिशियल. इफ यू गो टू जैमनी टू अटेन वैदिक नॉलेज, व्हाट यू विल टीच? मीमांसा. मीमांसा पढ़ा देंगे आपको. मीमांसा इज नॉट इन परंपरा. परंपरा मीन्स इट इज नॉट टेलिंग दैट the goal of life is to serve the Lord. It is not telling. Mimamsa says karma is highest. कर्म करो फल पाओ. तो अभी हमने सुनते हैं ना भारत में, ये सब कहाँ से फिलॉसफी वहीं से आ रही है. मीमांसा, वैशासिका, न्याय, तो ये सब ये षड दर्शन में आते हैं. ओके लीव दैट. तो हियर इट इज मेंशन, कितना हो गया? ओह बस खत्म, ये वाला खत्म कर दे. That such a direction from Krishna is more important than any Vedic instruction or even regulative service. That is why it is said that Satatam Smartabhya Vishnu Vismartabhya Jatuna Chit. ऐसा है ना. We should never forget Vishnu or Krishna and we should always remember Krishna. That is the only etiquette. Etiquette मतलब हम etiquette follow करते हैं ना, वैष्णव etiquette. तो ये वैष्णव एटिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट ये एटिकेट है कि हम हमेशा कोई भी एटिकेट करें, हमेशा कृष्ण को याद करें और उनको कभी भूले नहीं. दिस टू आर द गोल्डन प्रिंसिपल वी शुड ऑलवेज फॉलो. दैट्स व्हाई इट्स मेंशन ना, मन मना भव मद भक्तो. मेरे को हमेशा याद करो, मेरा भक्त बनो. वही चीज बोल रहे भगवान भी है. तो ये सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन है भक्तों के लिए. कुछ गड़बड़ भी हो गया जीवन में, ऊपर नीचे भी हो गया, तो हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? ये मान लो हम कुछ सेवा भी नहीं कर पा रहे, कोरोना हो गया, बीमार हो गया, कोई ऑफेंस हो गया, कुछ पाप हो गया, मन मना भव मद भक्तो. ये है कृष्ण का इंस्ट्रक्शन. ये हमेशा फॉलो करो. ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल आप हमेशा फॉलो करो, ये छोड़ना नहीं है. बिकॉज इट्स मेंशन सच अ डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी वैदिक इंस्ट्रक्शन. ओके डन. Always think of me and become my devotee should be taken as the final order of the Lord and should be followed. It's not a immediate order, it's not a intermediate order, it's a final order. And if one is simply convinced of this order and comes to devotional service giving up all other engagements, one will undoubtedly attain success. देखो ये कितना अच्छा है? किसी को भी, कोई भी आदमी कुछ भी प्रॉब्लम में हो, आप उसको बोल सकते हो. आप जैसे प्रभुपाद किसी माता जी का हस्बैंड मर गया या उसको छोड़ के चला गया, तो प्रभुपाद बोलते थे यू एक्सेप्ट कृष्णा एज योर हस्बैंड. देखो हाउ यूज्ड टू सो कॉन्फिडेंटली से. एंड समबडी, सम चाइल्ड, यू एक्सेप्ट कृष्णा एज मदर एंड फादर. एज अ डिवोटी यू एक्सेप्ट कृष्णा एज योर मास्टर. So how confidently he is saying, because it's mentioned here, always think of Krishna. Like for a wife, injunction is that she should think about husband. Yes, so if husband is not there or husband is nikamma, so then she can think about Krishna. There is no problem in that. कृष्ण के बारे में सोचो. इसलिए गोपियां हमेशा कृष्ण के बारे में सोचती थी. तो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रॉब्लम में हो, उसको हमेशा ये इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, कृष्ण के बारे में सोचो थोड़ा. Just think about, and how we can think about Krishna? We have to give him some books to read so that he can ponder upon certain philosophy of life. That is also equivalent to thinking of Krishna because it is connecting to Krishna. And Prabhupada brings Krishna immediately. After some time he brings Krishna. Prabhupada ऐसे छोड़ते नहीं है ना. Prabhupada एकदम लाइन बढ़ा के एकदम परफेक्शन तक लेके जाते हैं, है ना. Prabhupada is not like शुष्क ज्ञानी, कुछ बताएंगे फिर छोड़ दें, ऐसा नहीं. पूरा कनेक्ट करते हैं. So it is clearly mentioned here. One should follow other path to self-realization only as long as one is not convinced of the direct order of the Lord Sri Krishna. So this is a direct order that everybody should think of Krishna. Everybody should become devotee of Krishna. Madhyaji. Everybody should offer
obeisances to Krishna. And if he does, what will happen? He will go to Krishna. So this is, you can preach anyone and everyone. किसी को प्रचार कर सकते हो. कृष्ण के बारे में सोचो. आप मंदिर आइए, भक्त बनो. भक्त बनने का मतलब क्या? भक्ति करो. तो भक्ति का आप ज्ञान किसी को भी प्रचार कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है? फाइनल इंस्ट्रक्शन है कृष्ण का. इसके अलावा अभी कोई बोलेगा प्रभु जी वेद में ऐसा बोला है, अरे कोई वेद नहीं, ये फॉलो करो, भक्ति फॉलो करो. ये फाइनल इंस्ट्रक्शन है कृष्ण का, क्योंकि वेद 3 गुणों के लोगों के लिए दिया गया है, सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण. लेकिन ये क्या है? ट्रांसेंडेंटल इंस्ट्रक्शन है. बियॉन्ड दिस देयर इज नथिंग. दिस इज द फाइनल इंस्ट्रक्शन. और जिसको इसमें फेथ नहीं है, ठीक है, तुम को जो करना है करो. तुम अपना घर का कुछ धर्म कर रहे हो करो, परिवार का कर रहे हो करो. तो उनको क्या बोलना चाहिए? ठीक है, वो भी करो और भक्ति भी करो, ताकि धीरे धीरे भक्त बन जाए. ठीक है. तो भक्ति क्या है? इसमें ज्यादा टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस देखने की जरूरत नहीं है. यू कैन नाइसली प्रीच टू एनीवन. आप बोले प्रभु जी इसको भक्ति देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए? सबको देना चाहिए भक्ति. वो ना ले उसके ऊपर है. लेकिन महत्पाद रजोभिषेकम, महत के रज का थोड़ा सा टच कराना चाहिए. प्रपाद भोग, थोड़ा प्रसाद देना ही चाहिए. भक्ति का कुछ तो अंश उसके पास जाना ही चाहिए. इसलिए जैसे कीर्तन हो रहा है, ये भक्ति का अंश है. भक्ति का लिम्स ऑफ भक्ति, श्रवणम कीर्तनम. चैतन्य महाप्रभु आस्क्ड हरिदास ठाकुर, हाउ मलेच्छा विल बी डिलीवर्ड? आई एम चैंटिंग, बट हाउ मलेच्छा विल बी डिलीवर्ड? ही सेड मलेच्छा विल बी डिलीवर्ड व्हेन दे से हराम. जब गाली देते हैं ना मलेच्छा, मीट मुस्लिम्स, तो क्या बोलते हैं? हराम कहीं का. तो हराम में राम है, डिलीवर हो गया. देन चैतन्य महाप्रभु आस्क्ड हरिदास ठाकुर, ओके टेल मी हाउ कीट पतंग एनिमल्स विल बी डिलीवर्ड? देन हरिदास ठाकुर सेड, by our chanting they will be delivered. When we chant loudly they will be delivered. So then Chaitanya Prabhu said, yes, now I am happy. Now you have path for everyone to get delivered. Because holy name is a yajna for this age. It should deliver everyone. How? In this way. हराम बोल दिया, डिलीवर. और ये हरि नाम सुन रहे हैं, वो भी डिलीवर. इस तरीके से ये चैतन्य महाप्रभु ने बनाया है. And so that is what this is. मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु. Okay. तो यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपसाय. दिस इज वी नो दैट कृष्ण को अगर हम सेटिस्फाई करेंगे, सो होल पॉपुलेशन फ्रॉम मटीरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एवरीवन कैन बी सेटिस्फाइड बाय सर्विंग कृष्ण. दैट इज व्हाई दिस एक्चुअली द होल प्रोसेस ऑफ प्रीचिंग इज डिपेंडेंट अपॉन आवर फेथ. प्रभुपाद 40 साल प्रचार किए, एक भी भक्त नहीं बना. एक भक्त बना, आचार्य प्रभाकर, बस. वो भी थोड़ा कंडीशन था, वो इंडिया से बाहर जाने को उसको मन नहीं था. आचार्य प्रभाकर एक ही भक्त 40 साल. बट प्रभुपाद को भरोसा था कि मैं जगह बदल के प्रचार करूं. ये भी होता है, ये थोड़ा, अगर आपको प्रचार में कुछ रिजल्ट नहीं मिला, जगह बदलो, दूसरी जगह जाओ. लेकिन मैसेज पोटेंट है. आप प्रभुपाद बुक पढ़िए, प्रभुपाद के लेक्चर सुनिए, गुरु के लेक्चर सुनिए, वैष्णव से सुनिए. मैसेज पोटेंट है, प्रोसेस पोटेंट है. कहीं पे वर्क नहीं करता है क्योंकि वहां पे कुछ टाइम चाहिए वर्क करने के लिए. देखो मैसेज पोटेंट है, सब कुछ पोटेंट है, लेकिन अभी लोग रेडी नहीं है. यहाँ पे कुछ कंडीशनिंग है इनका, तो ठीक है दूसरी जगह पे करो. ऐसा यू मे चेंज द प्लेस, बट यू ऑलवेज शुड हैव फेथ दैट मैसेज इज पोटेंट. हमेशा. और विश्वास के साथ प्रचार करो. तो यहाँ पे लिखा है ना, क्योंकि आप कृष्ण को सेटिस्फाई करोगे तो सब लोग सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि कृष्ण सबके हृदय में है, वो सबको सेटिस्फाई करेंगे. तो वी शुड अंडरस्टैंड इन दिस वे. That is the final instruction of the Lord, that you just satisfy me and I will help everyone to become devotee and come back to me. Srila Prabhupada ki jai. Chalo, class end. 10 minutes ahead.